हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे नोट्स, यूनिट 5 के नोट्स। व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसके बारे में हम इकोनॉमिक कॉजेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे। और इससे पहले बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, इसी प्रकार के बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे एट वेरी रीजनेबल प्राइस। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखिए, द कॉन्सिलेटर असिस्ट द पार्टीज टू डिस्ट्रीब्यूट इन देयर निगोशिएशंस बाय रिमूविंग बॉटलनेक्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन देम। कॉन्सिलिएशन मशीनरी एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इज अंडर। सबसे पहले देखिए, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स परमानेंटली फॉर और फॉर ए लिमिटेड पीरियड फॉर स्पेसिफिक एरिया और फॉर ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री टू हुम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शैल बी रेफर्ड फॉर कॉन्सिलिएशन। नंबर 2 देखिए, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। द एक्ट ऑफ ऑल्सो empowers the government to appoint a board of conciliation for prompting the settlement of disputes where the conciliation officer fails to do so within 14 days. Number 3 देखिए, court of inquiry. In case the conciliation proceeds fail to settle an industrial dispute, the government has yet another option of referring the dispute to the court of inquiry. The court is expected to give its report within 6 months. अब बात करते हैं arbitration. Voluntary arbitration as a method of settling differences between worker and management was advocated by Mahatma Gandhi, who had applied it very successfully in the textile industry of Ahmedabad. However, voluntary attribution was lent legal identity only in 1956, where the Industrial Disputes Act 1947 was amended to include a provision relating to it. उसके बाद देखिए, ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर में परस्यूड द पार्टीज टू रेफर द डिस्प्यूट टू ए वॉलंटरी एट्रीब्यूटर. वॉलंटरी एट्रीब्यूशन refers to getting the dispute settled through an independent person chosen by the parties involved mutually and voluntarily. उसके बाद देखिए, the provisions for voluntary attribution was made because of the lengthy legal proceedings and the formalities and resulting delays involved in adjudication. It may, however, be noted that the attributor is not vested with any judicial powers. He derives his power to decide the dispute from the agreement that parties have made between themselves regarding the referring of in dispute to the attributor. The attributor submits his awards to the government. The government then pushes it within 30 days of its submission. उसके बाद देखिए, regarding the performance of voluntary attribution as a method of resolving disputes, it can be said at the very outset that it has failed to make such much progress. There exists general indifferences among parties to use voluntary attribution as a method of settling disputes. National Commission on Labor 1969 identified following causes for the failure of voluntary attribution. देखिए क्या क्या है. नंबर 1, lack of attributors who command the confidence of the parties to the disputes. Law provides no appeal against the award given by attributor. Easy availability of adjudication on the failure of negotiation or conciliation. Number 4, the absence of simplified procedure to be followed in voluntary attribution. उसके बाद कहते थे एजुकेशन. तो एजुकेशन के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में नहीं. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए. वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी वीडियो से आपको मिलते रहे. मिलता है अगले वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, या आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.